Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. In today's video, we are going to discuss the important news from the India edition of 26th April 2023. So here we are going to focus main again on Sudan Crisis and Operation Kaveri. That will be the major news today. New developments in the Sudan Crisis. We will also see the news on the editorial as well as on the foreign page related to Sudan Crisis. Then the next is we are going to study about the Genome India Project. So again, we have done this earlier. Now today we will see it in detail. The Genome India Project. What are the benefits of Genome India Project? Which agency of the government is running this project? And what are the other importance of such projects? Then we are going to study about the temperature anomaly. Okay. So we will study about the temperature anomalies, especially in the month of March because of the El Nino. Okay. So again we will have a study over this. So let's start with the news. The first important news is that amid ceasefire, first set of Indians leaves war-battered Sudan. So we already know that the government has launched Operation Kaveri, where two Indian Air Force jets C-130J and INS Sumedha was already stationed at port of Sudan. Now a new ship has also joined, that is INS Take. So it has joined the Operation Kaveri. And now if we will see that there is 72 hours ceasefire between the two opposing parties in Sudan. So government is trying its best to evacuate these Indian citizens in this 72 hours. So here the group of 278 people, they were among the first to reach Port Sudan for evacuation, and more measures are being taken to broaden the Operation Kaveri. Here Indian government is also cooperating with other countries like Saudi Arabia to evacuate the Indian citizens. Now if you will see, the crisis has hit the capital Khartoum and Darfur region of Sudan. The next is no scrapping of 4% quota to Muslims till May 9, says Supreme Court. So जो government of Karnataka earlier which has scrapped the 4% OBC quota to Muslims and giving 2% quota to other two groups in the OBC. So now the Supreme Court has said that there will be no scrapping of quota to Muslims till May 9. Okay. The next is Kochi Water Metro. So it is India's first water metro which has been launched by the Prime Minister in Kochi in Kerala. He has also laid the foundation stone for Digital Science Park in Kerala. The Chief Minister of Kerala is Pinarayi Vijayan. Now coming to the rescue service about the Operation Kaveri. So government ने Operation Kaveri launch किया है, and the government is making the most of this 72-hour ceasefire window to bring out 3,000 civilians who are stuck in Sudan. इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड इसको जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ओके. नाउ दिस टू फोर्सेस, दैट इज सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस एंड RSF. तो जो लड़ाई है पूरी सूडान की वो दो फोर्सेस के बीच में है. वन इज सुडानीज आर्म्ड फोर्स, the next is rapid support force. Now this Sudanese armed force, it is led by General Abdel Fattah al-Burhan. ओके. तो ये एक नाम ऐसे आप रखेंगे, जनरल अब्दुल अल फतह अल बुरहान. एक साइड ये है. RSF जो लीड कर रहा है, ही इज हमदान दागालो. ओके. ये फाइट क्यों हो रही है? बिकॉज देयर हैज बीन रिफॉर्म्स प्रपोज्ड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज इन सूडान. ओके. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे that India it is coordinating with other countries including US, UK, UAE and Saudi Arabia on logistics, timing, evacuation projects, and it is even using Saudi and French planes. If we will see that Sudan evacuation brings once more the focus of particular challenge that India faces in any conflict. Now where there is a challenge, अगर आप देखेंगे जो NRIs हैं इंडिया में, there are 14 million NRIs. ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 14 मिलियन. उसके बाद ऑलवेज देयर आर 7 मिलियन टूरिस्ट्स. ओके. सो आज प्रैक्टिकली कोई ऐसा जोन नहीं है जो जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अफेक्ट ना होते हो. कोई भी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इंडियंस इम्पैक्ट नहीं हो रहे. बी इट यूक्रेन, बी इट इराक और येमेन, बी लेबरर्स इन लीबिया, सीरिया एंड लेबनान. तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की उन्हें इवैक्यूएट करने की. ओके. तो अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन 2022 ने 22 had called for a
special force and standing operating procedure. Two things have been discussed by the parliamentary standing committee. Two things that are कि एक तो हमारे पास स्पेशल फोर्स होना चाहिए जो इवैक्यूएशन प्रोसेस से डील करे, दूसरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए. फाइन. द नेक्स्ट इज द राइट टू लिटिगेट. तो यहाँ पे द इशू इज ऋत्विक दत्ता हु इज द इन्वायरमेंटल लॉयर एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे CBI इज परस्यूइंग अ केस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऋत्विक दत्ता फॉर वायलेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है that they are using foreign funds to encourage litigation that will stall existing and prospective coal-fired plants in India. Okay, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर हम देखें तो इसमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा सेकेंड पैराग्राफ में कि इंडिया के पास अभी जो प्लान्ड कोल पावर कैपेसिटी एडिशन है वो है 28.5 गीगावाट की एंड 32 गीगावाट ऑफ प्लांट्स दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन. नाउ ये जो प्लांट्स हैं कोल प्लांट्स, मैनी ऑफ देम हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू इनसफिशिएंट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन, रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम. Now this problem has come from the rulings of National Green Tribunal or from lack of adherence to norms prescribed under environment protection and related legislations. The next is there are many multilateral agencies including the International Development Agency, International Finance Corporation. Now they are stopping the funding for the new coal plants. So many coal plants they are running inefficiently and they rely on lenient environmental curbs as they are critical to India's power needs. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे that on the global scale India already aims to become the net zero country by 2070 and by 2030 50% of the energy will be coming from renewable sources as the commitment made in COP26. Fine. The next important news is understanding the temperature anomalies. Temperature anomaly क्या होता है? जब टेम्परेचर किसी भी मंथ का या किसी भी ईयर का जब डेविएट करता है उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं टेम्परेचर एनोमली. सो इफ यू विल सी मार्च 2023 इट वाज द सेकंड वार्मेस्ट मार्च इन रिकॉर्ड. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो एक डेटा आया हुआ है द एनुअल समरी बाय द US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो इट सर्व्स एज एन एक्सेलेंट रिसोर्स टू कॉन्टेक्चुअलाइज द इंडिविजुअल्स मंथ रैंकिंग बाय टेम्परेचर एनोमलीज. अब यहाँ पे देखिए डेटा क्या बोलता है कि जो 2023 का मार्च था तो यहाँ पे दो मार्च है, एक 2023 का मार्च, एक है 2016 का मार्च. तो सबसे वार्मेस्ट जो था दैट वाज 2016 मार्च. नाउ द रीजन गिवन हियर फॉर 2016 इज एल नीनो ईयर, दैट इट वाज द एल नीनो ईयर. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर 2023 मार्च? तो अगेन हमने न्यूज़ पढ़ा हुआ है कि नाउ दिस ईयर ओके एल नीनो इज डेवलपिंग. सो अगेन वी कैन सी द टेम्परेचर राइजिंग इन 2023 मार्च. ओके, नाउ अगर आप देखेंगे इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर आर टू फिनोमिना. वन इज एल नीनो, द नेक्स्ट इज ला नीना. ठीक है, एल नीनो का मतलब वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, ला नीना का मतलब हो जाता है कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन. ठीक है, एल नीनो इट इज एसोसिएटेड विद ड्राई कंडीशन इन रीजन and La Nina it is associated with more than normal rainfall. More than normal rainfall. Okay, these are the two things. Now since El Nino is developing this year, so we can see the March temperatures they are rising. Now if you will see that there is one more connection, that if the temperature rises so high, so there is also the chances that the Arabian Sea it will warm too much so that it can have a cyclonic circulation in this year. That is one thing. Then excess pre-monsoon rain over northwest and scorching heat waves in Kerala and Odisha. These are the other anomalies which can be observed. Now there is one more connection. That connection is Eurasia. देखिए यूरेशिया और मानसून का क्या कनेक्शन है. अगर यूरेशिया में स्नोफॉल ज़्यादा हुआ तो मानसून हो जाएगा कम. ठीक है, और अगर यूरेशिया में स्नोफॉल कम हुआ
तो मानसून हो जाएगा आपका ज़्यादा। फाइन। So if you will see that climate scientists, they need to provide the proper context when they compare and rank individual months against each other. तो यहाँ पे साइंटिस्ट का जो कहना है कि if you will see that March over Eurasia in a form of below normal precipitation, we know that reduced snowfall over the Eurasian landmass has historically tended to favor a strong monsoon. ठीक है, ये नॉर्मल देखा गया है, बट जैसे ही एल नीनो ईयर आता है वो इस चीज को ऑफसेट कर देता है। ठीक है, कि फिर यूरेशिया में क्या हो रहा है उसका फर्क इंडियन मानसून पे नहीं पड़ रहा है। सो यहाँ पे क्लाइमेट साइंटिस्ट को क्या करने की जरूरत है, दैट दे हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दैट फॉर इंडिविजुअल मंथ अगेंस्ट द ईच अदर, कि क्यों इस फॉर व्हाट पर्टिकुलर रीजन द टेम्परेचर इज राइजिंग इन मार्च 2023. The next is genome sequencing and the Genome India Project. So if you will see, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पे 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करना था, उसका डेटाबेस क्रिएट करना था। तो 7,000 जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, 3,000 जो है इट इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक एक्सेस टू रिसर्च। ओके, तो जो ह्यूमन जीनोम होता है इट इज़ द एंटायर सेट ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, and this DNA it carries the complete genetic information which is responsible for development and functioning of organism. तो अगर आप एक बार पूरे जीनोम को डिकोड कर देते हो तो आप एग्जैक्टली डिजीज के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, कि कौन से बेस सीक्वेंसिंग की वजह से डिजीज हो रही है, so that can be easily found out. So if you will see that the DNA it consists of double stranded molecule built up by 4 bases. अब ये जो होता है, जो सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, इट इज़ आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमंस बट देयर आर डिफरेंसेस इन जीनोम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग दैट मेक्स देम यूनिक। तो किसी भी ह्यूमन का जो जीनोम होता है, ठीक है, वो जो है वो आइडेंटिकल नहीं होता, वो हमेशा एक दूसरे से अलग होता है। तो जीनोम दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो अब हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें जो है कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, जैसे कि रेयर डिसऑर्डर्स, प्री कंडीशंस फॉर डिसऑर्डर्स, कि किसके अंदर कौन सा जीनोम सीक्वेंसिंग है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। तो अगर वही सेम जीनोम सीक्वेंसिंग किसी और पर्सन के अंदर है तो उसको भी ऑब्वियसली सेम डिजीज होगा। एंड देन कैंसर, these are the things which can be nearly found out by the genome sequencing. Okay, now see how it helped during the pandemic. So in January 2020 एक case study है, Chinese scientist Yongzhen Zhang, he sequenced the genome of a novel coronavirus causing infection in the city of Wuhan. Then he shared it with Edward Holmes in Australia, who published the code online. So after getting this genome sequencing, okay, then the whole process started of making vaccines, studying the mutant variants, how to track the mutating variants, how to combat this virus, okay, and how it is going to spread, and then to come up with the vaccine. Now, अगर आप देखेंगे इंडिया, it has also put in place a sequencing framework which is called as Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia, जिसको हम कहते हैं INSAGOV, which is the consortium of labs across the country which is scanning the coronavirus samples from patients and flagging the presence of variants which are spiking the transmission. अब INSAGOV के पास दिसंबर 2021 तक कितने सैंपल्स हैं? 1000 सैंपल्स. Now coming to Genome India Project. So India's 1.3 billion strong population consists of 4,600 population groups. ठीक है, तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रुप्स कितनी है? 4,600, और दिस पॉपुलेशन ग्रुप्स आर एंडोगेमस. ठीक है, उसके बाद इसके वजह से क्या हुआ है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका एक डिस्टिंक्ट वेरिएशन है विद डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस ऑफन एम्पलीफाइड विद इन सम ऑफ दिस ग्रुप्स. मतलब कि अगर आप देखेंगे कि एंडोगेमस ग्रुप है, मीन्स दे आर मैरिंग इन सेम रीजन और सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी. तो अगर मान लीजिए कि उस कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंसिंग में समथिंग इज देयर विच इज कॉजिंग सम डिजीज एक्स, so this the X disease will get amplified over a period of time because of reproduction. Fine. So this Genome India project, it helps in creating a database of Indian genomes which will allow researchers to learn more about genetic variants which are unique to India's population group, and then we can customize our drugs according to the disease burden of India.
Then how many institutions are currently participating in this project? There are about 20 institutions across India who are involved in the project. The next is gig workers. Okay, so gig workers, they are a type of contractual workers who are not covered in the traditional employer-employee relationship. ठीक है, तो गिग वर्कर्स के बारे में अब राजस्थान ने एक बिल लाया है विच इज कॉल्ड एज राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023 which has stringent provisions to safeguard the interest of these platform workers or gig workers. Okay, so if you will see, जो code on social security है, it allows the platform worker to be defined by their vulnerability, not by their labor nor the vulnerabilities of platform work. अब कोविड-19 में हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो अब जैसे हम एक एग्जांपल लें स्विगी का, तो जो बेस पे था पहले स्विगी में जो काम करता था, दैट बेस पे वाज ₹35. नाउ इट हैज़ बीन reduced to ₹10 per delivery order. Fine. Now let's take the code of wages, code on social security one by one. So if you will see code on wages 2019, so it tries to expand the idea by using wage as the primary definition of who is an employee. Okay, then code on social security अगर आप देखोगे, so there are terms like gig worker, platform worker and gig economy, they appear in code on social security. Now the next is that code on social security 2020, it makes platform workers eligible for benefits like maternity benefits, life and disability cover, old age protection, provident fund, employment injury benefits. But ये जो eligibility है, that does not mean that these benefits will be guaranteed to them. Okay, so यहाँ पे क्या हो सकता है कि central government they can formulate schemes that cover the aspects of personal and work security of these gig workers. Now coming to this article, this is little important because this article is related with nuclear accidents. Okay, so today is the day when Chernobyl nuclear accident took place in Ukraine. Chernobyl nuclear accident. Okay, so on April 26, 1986 Chernobyl nuclear accident took place. उसके बाद अगर आप देखोगे ये वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर है. इसका जो रैंकिंग है दैट इज 7. सो द रैंकिंग ऑफ द Chernobyl nuclear disaster on international nuclear event scale is 7. The only other nuclear accident which has this 7 rating on international nuclear event scale is Fukushima nuclear disaster. Fukushima nuclear disaster. Okay. Some other nuclear accidents which have taken place is 3 Mile nuclear accident. 3 Mile nuclear accident. 3 Mile Island nuclear accident. So this occurred in USA. ये USA में हुआ है. ठीक है, that is important. Now if we will say that we have an international body which is called as International Atomic Energy Agency, which was established in 1957. It is headquartered in Vienna in Austria and its motto is Atoms for Peace. Now the next news is Shiromani Akali Dal Patriarch and former PM CM Prakash Singh Badal passes away. So he was the 5-time Chief Minister of Punjab. So he became the Chief Minister of Punjab for the first time in 1970. At that point of time, he was the youngest Chief Minister of any Indian state, and he was first elected to the Punjab legislature in 1957, and then since then he had been elected 9 times, and he was awarded the Padma Vibhushan, that is the second highest civilian award of the government of India, in 2015, and he was a leader of Shiromani Akali Dal party in Punjab. The next is इंडिया टू होस्ट SCO मिनिस्टर्स डिफेंस मीटिंग. सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इस बार इंडिया होस्ट करने वाला है बिकॉज इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर SCO in 2023. So it will also see the participation from China and Russia. So China's defense minister Li Shangfu, this name is important, and Russia's Sergei Shoigu, they both will be present in this meeting. Here the participation will be from different countries who are members of SCO and also the observer countries. So let's see who are the members of SCO and who has the observer status.
So members are Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan and India. And the observer status is Belarus and Iran, where Iran is going to become the member this year. Now coming to huge biological risk after Sudan fighters occupy lab. So the World Health Organization has said that fighters in conflict-ravaged Sudan had occupied the National Public Laboratory, which is holding samples of disease including polio and measles, which is creating a dangerous situation in the country. The next is now Sri Lanka is also seeking India's help in evacuating its citizens from Sudan. The next from economy, oil prices, El Nino are the key risks to inflation and growth outlook. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से कहा है कि जो इंडिया का जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है इस साल, जो इकोनॉमिक सर्वे बजट में अनाउंस हुआ था, now it has the risk from El Nino conditions which can lead to reduced rainfall, which can trigger a drought, and the geopolitical development and concerns about geopolitical financial stability. Along with that, now OPEC plus groupings, they have announced the production cut in oil prices, in oil production, so which can see that the oil prices can rise in the future. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.